जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब कोई। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका विश्व आप सभी के समक्ष फिर से रेडी हूँ हमारे इंडियन रिवर सिस्टम्स के अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज हम मेरे दोस्तों इंडियन रिवर सिस्टम्स को हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। आज हम गंगा रिवर सिस्टम्स के ट्रिब्यूटरीज को डिटेल्ड एस्पेक्ट के साथ स्टडी करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ कि आप स्पेशली अगर रिवर सिस्टम्स को कवर करना चाहते हैं अच्छे से, आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए दोस्तों कि स्पेशली अगर यूपीएससी एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपको उसके सिलेबस को सेपरेटली नहीं, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट को लिंक कर पाएँ। जिस दिन आप जियोग्राफी को इकोनॉमी से, जियोग्राफी को एनवायरनमेंट से, जियोग्राफी को कल्चर से लिंक करना सीख गए, उस दिन आप समझिए कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। दैट लिंकिंग टेक्स टाइम, बट योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू लिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस in order to cover any topic holistically. So today we are going to do something which is quite innovative. We are going to do something which is quite new, because you will not find that detailed analysis of any geographical factual aspect. I will be doing the analysis for you and try to make that particular aspect crystal clear. और हमारा यही फोकस होगा कि गंगा रिवर सिस्टम्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो होते हैं, ये दोनों रिवर सिस्टम्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, दे आर देमसेल्व्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी विल बी ट्राइंग टू कवर देम इन ग्रेट डिटेल्स एंड माई टारगेट विल बी टू मेक द कॉन्सेप्ट at the end of the class completely aware to you, and you become confident that any question which is asked from that tributary you will be able to answer. So let's begin, my dear friends. Today we are going to begin the first important left bank tributary. Left tributary आज हम start करने वाले हैं रिवर गंगा के, that is रामगंगा. देखिए दोस्तों, मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता दूं कि आप जब किसी भी रिवर सिस्टम्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि देखिए मेरी एक लिमिट है, मैं इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स को मैं कवर करूंगा, बट बहुत बार क्या होती है कि कुछ न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाती हैं. वो रिवर सिस्टम्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ये आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको चाहिए उस किसी भी रिवर सिस्टम्स को प्रिपेयर करने के लिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू नरेट यू सम फ्रेमवर्क. जस्ट कीप इन माइंड, व्हेनेवर एनी रिवर सिस्टम यू स्टडी इन द न्यूज़पेपर, just do one thing. Suppose this is the river system. Try to focus on the source of the river. Okay? Try to focus on the mouth of the river. Okay, my dear friends. Second important aspect. Try to focus on the topography, the nature of the river system. Okay. Third important aspect. Try to focus on certain environmental facts. जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है क्या, कोई नेशनल पार्क लोकेटेड है क्या, ऐसे फैक्ट्स को भी आप कवर करने की कोशिश करें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू लोकेट एनी हिस्टोरिकल location or capital if located on the banks of the river. अगर ऐसे एस्पेक्ट्स आप किसी भी रिवर सिस्टम्स को कवर कीजिएगा, और स्पेशली रिवर गंगा रिवर सिस्टम्स को आपको इस एस्पेक्ट के साथ कवर करना जरूरी है, बिकॉज यू नो द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन विल बी इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड सो यू हैव टू कवर एनी टॉपिक होलिस्टिकली. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू डील विद द रामगंगा. Let's first visualize where is the exact location. देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए मैप बनाता हूं so that आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाए. ओके,
Okay, approximately this is the river. Now you must be knowing, suppose this is the UK, उत्तराखंड. Okay, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि स्पेस आपको कंफ्यूज कर जाइएगा. ये है आपका उत्तराखंड and this you know is the Uttar Pradesh. Okay, so if we draw, suppose this is the Ganga river system approximately. Visualize कर पा रहे हैं गंगा river system को, and our river system which we are going to do, that is the Ramganga, it emerges somewhere near here and it matches somewhere near here. Just visualize, आप लोकेशन देख ले ताकि आपको माइंड में अगर पता चले कि रामगंगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन्स का गंगा रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड रिवर है. सो इस मैप को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसके लोकेशन को थोड़ा विजुअलाइज कर पाएगा हमें. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, अब इसी का मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं और आपको चीजें क्लियर करते हैं. ओके, सपोज दिस इज द गंगा रिवर सिस्टम. ओके माय डियर फ्रेंड्स, now this is the macroscopic view of our Ramganga. This is our focus today. Now as the topic said, the source. What is the source of the river? What is the source? My dear friends, the source of the river is Dudha Toli Hills. Where is it located? It is in the Pauri Garhwal district. Okay. Which state? Uttarakhand. Now you must be asking me that Dudhatoli Hills, whether it is an independent hill or whether it is a part of a greater hills. My dear friends, Dudhatoli Hills is a part of Himalayas. And which Himalayas? It is the part of a middle Himalayas, my dear friends. Okay, middle Himalayas. Now what are middle Himalayas, what are outer Himalayas, lesser Himalayas, what are Shivaliks? We will be dealing with the topic when we cover the Himalayas. But you must be keeping in mind that it is a part of middle Himalayas, and middle Himalayas are concentrated especially in the two states, that is the Himachal Pradesh and Uttarakhand. So since it is emerging from which place? Uttarakhand. So it is a part of what? It is a part of middle Himalayas. So just revise with me. Source Dudhatoli Hills, Pauri Garhwal district, Uttarakhand, part of middle Himalayas, and middle Himalayas are concentrated in this Himachal Pradesh and this Uttarakhand. I hope the source is clear to you, my dear friends. Now the next aspect, this is the mouth. So obviously the mouth is the Ganga river system, but what is the location? The location of the place is Hardoi. What is the location? This is the Hardoi district. Okay. I hope this is clear. So we have done the important aspects, source and mouth. Now my dear friends, you must know one thing, that these are the hilly terrains, and when it enters this place, this is a plains, because especially the UP lies in the plains. So there must be a question in your mind that which are the places where the river changes its nature. रिवर अलग अलग नेचर में होता है दोस्तों. जब वो अपने लाइफ स्टेज में फ्लो करता है तो वो अलग अलग नेचर से फ्लो करता है. जब वो हिमालय से हमारे पर्वत से उतर रहा है तो स्पेशली ह्यूज वेलोसिटी से उतर रहा है. एंड व्हेन इट कम्स इन द प्लेन्स, सो आपको पता है प्लेन्स में आएगी तो वो वाइड होगी, वो जेंटल होगी, वो डिपोजिशन करेगी ज़्यादा. सो आपको ये चीज़ मन में आ रहा होगा ना कि ये रिवर सिस्टम तो पहाड़ से होते हुए प्लेन्स में आ रहा है. सो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे ये प्लेन्स में एंटर करता है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेन्स पे आप यहाँ पे विजुअलाइज करें. ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है. ये स्पेशली यहाँ पे मैं मार्क करूँ दिस पॉइंट जहाँ पे ये तो आपको बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर. सो ये जस्ट बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो जो पहला रीजन है दैट इज द बिजनौर डिस्ट्रिक्ट. बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. सो दिस इज द प्लेस where the Ramganga river enters the plains.
सो ये रीजन के बाद रिवर्स का नेचर चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब आप पूछेगा कि भाई ये प्लेन्स में एंटर कर रही है तो ये पहाड़ कहां छोड़ रही है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहाड़ छोड़ रही है, लास्ट जो पॉइंट है इसका यहां पे, अगर इसको बनाए हम उत्तराखंड, सो उत्तराखंड में लास्ट जगह है वो जहां पहाड़ छोड़ रही है, और उस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है पौड़ी गढ़वाल। सो वो डिस्ट्रिक्ट जो रीजन है वहां से इमर्ज हो रही है वो भी पौड़ी गढ़वाल है, और पौड़ी गढ़वाल ही उसका लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां से रिवर जो डाउनस्ट्रीम में आती है वो हिल से प्लेन्स में आती है। सो इस फैक्ट का यही इंपॉर्टेंट था कि द रिवर रामगंगा चेंजेस इट्स कोर्स फ्रॉम द हिल्स टू द प्लेन्स। इट्स लास्ट पोजीशन इन द हिल्स हाइट is the Pauri Garhwal, and it enters the plain where in the state of Uttar Pradesh, which place? Bijnor district. I hope up to this point this is clear to you. Now the other important aspect, as I said, linking the environment. चलिए environment को link करते हैं रामगंगा river system के साथ। My dear friends, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, यहाँ पे ये उत्तराखंड, ऊपर में उत्तराखंड है, सो उत्तराखंड में जस्ट इस जगह अगर हम पॉइंट बनाए, मैप में अगर दिखाएं, सो दिस पॉइंट हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हम ऐसे ऐसे मार्क करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दैट इज द कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट, या इसको हम लोग जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो अभी देख लिए इस रिवर सिस्टम से हमने एनवायरमेंट लिंक किया, कैसे कि इसके ये जो रिवर सिस्टम है इट पासेस थ्रू अ नेशनल पार्क, दैट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाउ यू मस्ट बी आस्किंग दैट दिस नेशनल पार्क, इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये खुद है कि इट इज अ नेशनल पार्क। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस नेशनल पार्क इज दैट in 1973 the project tiger was launched from this national park, and the objective of this project was to protect the tigers in our country and prevent it from extinction. So it was launched during the Indira Gandhi government, and the place was the Jim Corbett National Park. So see how geographical phenomena is linked to a environmental phenomena. I hope this is also clear to you. Now the next important thing, third important aspect, that whether any important place is located on its bank. Yes my dear friends, important places. तो जो important place है, एक आप याद रख सकते हैं, एक आइडिया, ठीक है, मुरादाबाद, this is in UP, and other important point is बरेली। बरेली का बाजार, बॉलीवुड सॉन्ग्स में आपने बहुत बार सुना होगा, बरेली प्लेस। सो बरेली इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। सो अगर हम इसकी बैंक्स की चीजों को समझने की कोशिश करें, सो बिजनौर इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, पौड़ी गढ़वाल इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, मुरादाबाद इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, बरेली इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, एंड फाइनली द माउथ हरदोई। So these are certain important places. So see, we have linked what? We have linked this with the places too, the geographical places too. Now the most important aspect, my dear friends, try to understand the nature of the river. This river system enters the plains. The UP region, it enters the plains, and in the plains this region is referred to as the Tarai region. Tarai region. Now Tarai region is why? This region is very important because it has very fine quality of alluvial deposits, and when there is alluvial deposits they will be good for agriculture. So this region is very good for agriculture. So what is the economic aspect, my dear friends? Economic first aspect, it is good for agriculture. Try to understand the nature, dear. How holistically we are covering this topic. And the next important fact, my dear friends, you must be knowing that the alluvial sands, alluvial sands are rich source of precious metals like gold, source of gold. Okay, so India's 1% gold reserve is found on the banks of the Ramganga river. So we have also linked the economic aspect. Okay, now the last important aspect, my dear friends, cultural. We will be linking the cultural aspect also with this river. What is the cultural aspect? The cultural aspect of this river is near Bareilly.
the place, you know, the place I've marked here, Bareilly. Okay, Bareilly is approximately, if you want to see approximately, it will be somewhere like here. So on the place like the Bareilly, there is a very important Hindu festival which is celebrated every year, that is referred as Ganga Dasahara. On its bank, that is on the 10th day of the month of the Ganga Dasahara, this festival is celebrated. Especially just keep the name in mind, Ganga Dasahara. What is Ganga Dasahara is not important. It's a cultural aspect that every year the Ganga Dasahara is also celebrated near the banks of the river, where near the place called Bareilly. There is a very big fair which is organized every year. So you can see, my dear friends, how from a simple geographical important tributary of Ramganga, we are able to link the different aspects from the source, its mouth, the environmental aspect, the important places, the economic aspect and the cultural aspect. So this is the approach which we must adopt, especially for all the tributaries of the river Ganga, and if you try to do, then do also of the Brahmaputra river system. If you follow this criteria for any current affairs or any river system in India, I will guarantee you that any questions which will be asked in the examination, you will be in a position to attempt that. So I hope this video is informative for you. If you like this video, my dear friends, please, I request you, please share this video. If you like my effort, subscribe me, press on the notification bell button so that you get the notification of my next videos, and please support us for our motive. What is our motive? You all know, education for all, making education affordable. So I hope this video has been informative for you. आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जय हिंद, जय भारत।